viewers to the latest edition of 6 Stories at 6, and I am Rakshita Mishra with you. It's a historic turnout, a historic voter turnout in Bihar. We are going to get you the latest update on that, and also what does this really mean. We will connect with our reporters on ground zero on that. Story number 2 is going to be more developments from Bihar, as now the RJD had alleged rigging in polls on the first phase, and ECI has quashed all the claims. And story number 3 is how the Jan Swaraj party has lost at least 4 of their candidates today, just on the eve of polling, in fact, last night. We'll tell you more on that. And poll day violence in first phase of the elections, viewers. Vijay Sinha, Deputy Chief Minister's convoy, has been attacked. We'll get you the exclusive reaction on Republic TV. And also, Prime Minister Modi today was in Araria of Bihar, and he raked up Jungle Raj and the issue of infiltration before the voters. And finally, we get you how Rahul Gandhi's hydrogen bomb is only exploding on himself. His claims have been thwarted now by a Brazilian model who he claimed to be as a photograph on many voter IDs. We'll tell you more on that, but first, viewers, Bihar has voted in the first phase of assembly elections today. The enthusiasm has been very much higher this time. As of 5 p.m., we can break that. As of 5 p.m., voter turnout stood at 60.13%. That's nearly 10 points higher than 2020. In Buxar, the voter turnout is 55.10% as compared to 2020's 53.84. Munger, the voter turnout has also been higher this time. Munger is a very important seat, and the turnout has been encouraging. As of 5 p.m., 54.90% as compared to 2020's 43.64%. And in fact, an encouraging sign has been that many of the Maoist hit areas have also seen a voter turnout. So that is a historic development itself, and that's what we are getting to you. And we can always tell you the updates as to the latest that has come in on on Bihar. And the RJD, now viewers, meanwhile there has been a blame game already, and war of words that is unfolding. RJD now has raised allegations over the conduct of the first phase of polling in the Bihar Assembly elections. Now, they have alleged deliberate attempts to slow down the voting process and intimidate voters in areas considered strongholds of the Mahagathbandhan alliance. The EC, Election Commission, has firmly rejected the charges. Take a look. As voting for the first phase of the Bihar Assembly election picks up, the RJD has raised the allegation that the power supply to booths situated in Mahagathbandhan strongholds were disconnected to slow down voting. However, the Bihar's chief electoral officer has responded to RJD's claims, calling the allegations, quote, completely baseless and misleading. The Election Commission further clarified that the polling was being held under full surveillance, including live CCTV monitoring, and assured that no irregularities have been found in the conduct of the first phase. The Chief Election Commissioner CEC Ganesh Kumar and both election commissioners are also monitoring CCTVs installed in all polling stations from the control room. Bihar has recorded the highest voter turnout of 53.77% till 5 p.m. in Phase 1 compared to 2020 elections. Leaders from both alliances, the NDA and the Indie Bloc, have claimed that the turnout reflects the support for their agendas. But the ground energy clearly pointed to a high-intensity race. While other parties are working tirelessly to woo their voters, Prashant Kishore's Jan Swaraj party, the debutante party, is struggling to even keep its candidates together. Munger's candidate Sanjay Singh is the latest to be added in the list of candidates who have fled Jan Swaraj party. And this is happening right when the elections are happening, right when the polling is happening. Here's more. As the battleground of Bihar heats up,
Prashant Kishore-led Jan Suraj party faces another blow. Jan Suraj's Munger candidate Sanjay Singh has switched to the BJP just a day before the first phase of Bihar polls. संजय जी, पहले आपने शुरुआत की ये कहकर कि आप बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। जन सुराज आपने ज्वाइन कर ली और इलेक्शन वोटिंग शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर रहे, कारण क्या है? जन सुराज पार्टी का जो कार्यक्रम था प्रत्याशी के लिए, क्षेत्र में कार्यक्रम के लिए, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं बन पाया पार्टी का, और यहाँ के जो लीडर थे जिला के, उनका जो है समन्वय स्थापित नहीं हो सका और रहते थे हमारे साथ और प्रचार करते थे दूसरे दलों का। With Sanjay Singh leaving the party, three-cornered contest in Munger has turned into an electoral battle just between the NDA and RJD Congress-led Mahagathbandhan. भारत माता की जय, गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. Joining the new party in the presence of BJP's Munger candidate Kumar Pranay, Singh extended his support to the NDA alliance. Sanjay Singh called Prashant Kishore-led Jan Suraj unfit for Bihar, emphasizing how the state requires a stable and strong leadership. He believes that although the ideologies of just a year-old Jan Suraj echoes with the public, it is not enough to bring a real and significant change in Bihar. This has resulted as a big blow to Prashant Kishore's party, who faced similar fate earlier in October, when former Jan Suraj candidates from Danapur, Brahmapur and Gopalganj also jumped ship. A red-faced Prashant Kishore has accused the BJP for the sudden switch, but the claims were later refuted by the party. And the first phase of polls was marred by violence. Deputy Chief Minister of Bihar, Vijay Sinha, was geared out and his convoy was attacked with stones and slippers as well. He was facing sloganeering, and thereafter what unfolded was high drama in Lakhisarai. Here's more. As phase 1 of the Bihar elections commence, tensions have flared in the Lakhisarai district. Some unidentified men hurled stones and slippers at Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha's convoy in Bihar's Lakhisarai. Vijay Kumar Sinha, who is contesting from the Lakhisarai seat, claimed that the assault was carried out by RJD supporters attempting to block his Khoriari village visit. Speaking to Republic, the Deputy Chief Minister, who was gheraud during the incident, warned that bulldozer action will be taken against people who resort to violence. ये जंगल राज का दृश्य फिर दिखाई पड़ा जो 90 के दशक में होता था। प्रशासन की भी अकर्मण्यता झलकी जब वो आया था। जब इस तरह की घटना है तो वो रोड का मामला, रोड तो बन रहा है, आप लोग भी ने देखा कि रोड बन रहा है, रोड 10-20 दिन पहले से ही शुरू है। तो इस तरह की घटना आज भी जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना चाहता है विजय सिन्हा के रहते। कौन लोग थे? आरजेडी के कुल लोग थे, आरजेडी के गुंडे लोग थे। ये फिर जानलेवा हमला है, मतलब आपको देख रहे हैं तो एक बार आप खुद दिखाइए। ये देखिए, ये गोबर के निशान और जो शीशे पर पत्थरबाजी भी की गई, पत्थर भी फेंके गए हैं क्या? तो हमारा बॉडीगार्ड को लगा, दिखाइए ना, बॉडीगार्ड को भी चोट लगा है। Visuals of the incident showed a crowd surrounding Vijay Sinha's vehicle, shouting slogans and preventing his convoy from moving ahead. Several people can be heard chanting Murdabad slogans and stopping the BJP leader's convoy from entering the village. BJP has slammed RJD for the attack. BJP leader Ravi Shankar Prasad claimed that this proves RJD's Jungle Raj politics. देखिए, हमारी पार्टी हमारे उप मुख्यमंत्री की पीड़ा और आक्रोश के साथ पूरी खड़ी है। उस गांव में पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आरजेडी के समर्थक लोग वहां बहुत हैं। यही तो हम दिखाना चाहते हैं प्रदेश को कि सरकार का पता नहीं, लेकिन देखिए उप मुख्यमंत्री के काफिले पर चुनाव के दिन हमला होता है और उनके एजेंट्स को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। और जो एसपी का कमेंट है उसे मैं उचित नहीं मानता हूं।
ये माइनर घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है। Meanwhile, the EC has also taken cognizance of the situation. Chief of Election Commission Gyanesh Kumar has directed the DGP of Bihar to take immediate action against the miscreants. However, the RJD has completely denied any involvement, turning the blame on NDA, saying that they orchestrated the attack themselves for political gain. सब हम नहीं जानते, अरे वो सब अपने से करवाते हैं, वो सब अपने से करवाते हैं कि कैसू वोट बढ़े, कैसू अथी बढ़े। 2-3 बार तो हम जिता दिए तो सीएम बन गए। आप देखेंगे कि सीएम बनते हैं। Further investigation is now underway as the political heat turns up in poll-bound Bihar. Prime Minister Narendra Modi addressed a rally in Bihar's Araria today ahead of the first phase of polls, and he spoke to a crowd and saw seeking blessings from the voters. He also raked up the issue of infiltration, saying that RJD and Congress are only going to protect the intruders who are only stealing the jobs of the people of Bihar. Watch this. As voting continues in full swing for the first phase of Bihar Assembly elections, Prime Minister Narendra Modi spoke at a public rally in Araria today. At the rally, Prime Minister Modi praised the people of Bihar for turning out in large numbers and expressed his confidence in a positive outcome for the elections. ये दृश्य अपने आप में चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये डंके की चोट पर साफ कर देता है। He lauded the enthusiasm and urged many others to come out and cast their vote. मैं सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। मेरा विनम्र आग्रह है, जिन साथियों ने अभी तक मतदान नहीं किया है, जो अभी तक अपने घर से निकले नहीं हैं, वे जल्द से जल्द वोट देने के लिए निकले। Prime Minister Modi also urged the people to use their vote wisely, recalling past misgovernance under RJD. 90 का दशक आया और बिहार पर आरजेडी के जंगल राज ने हमला कर दिया। और जंगल राज मतलब कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन, ये जंगल राज की पहचान बन गए। Highlighting the lack of development, Prime Minister Modi recalls Bihar's lost years under Jungle Raj. मेरे नौजवान साथियों, बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया। He also took a jibe at RJD leaders for spoiling an entire generation's future and criticized Bihar's 15-year Jungle Raj, citing zero development. 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने टूरिस्ट सर्किट विकसित हुए, कितने टूरिस्ट सर्किट विकसित हुए, जरा जोर से बताइए, कितने विकसित हुए? 0, 0, नील बटे सन्नाटा। जंगल राज के उन 15 सालों में न बिहार में एक भी IIT आई, ना ही IIM आया,
ना ही एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ हुई। पूरी एक पीढ़ी का नौजवान देखिए, पूरी एक पीढ़ी का भविष्य आरजेडी के नेता खा गए दोस्तों। Supporting NDA government, Prime Minister Modi praised Nitish Kumar for the work done under his rule. साथियों, एनडीए की सरकार में नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में आईआईटी खुली है, बोधगया में आईआईएम खुला है, पटना में एम्स खुला है, दरभंगा एम्स का काम तेज गति से चल रहा है। अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है। All right, we have a breaking news coming in, viewers. Bihar has recorded the highest voter turnout in 25 years. It's a historic number that has been recorded in phase 1 of Bihar elections 2025. This is a record. 25 years. Highest voter turnout in Bihar, from 46.5% turnout in the year 2005 to over 60% this year. Bihar votes in historic numbers in phase 1 of the assembly elections. In fact, Sumit Jha is joining us live on the broadcast, reporting from ground zero in Bihar. Sumit, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। 25 सालों बाद इतना बड़ा, हम कहेंगे कि ये इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड तोड़ टर्नआउट रहा है। क्या कुछ संकेत मिलते हैं इससे? देखिए, दो संकेत इसमें जो आमतौर पर विश्लेषक लगा सकते हैं। एक संकेत कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है, और दूसरा कि नहीं, सरकार यही चाहिए जी। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में जो 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, कोई हंग असेंबली नहीं होने वाली है। इस वोटिंग टर्नआउट को देखकर आप साफ कह सकते हैं सरकार जिसकी भी बनेगी बहुमत के साथ या प्रचंड बहुमत के साथ। 122 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन मैं जहां तक अनुमान लगा रहा हूं कि सरकार जिसकी भी बनेगी उस गठबंधन को 150 से 160 सीटें मिलेंगी। ये वोटिंग टर्नआउट का आकलन कहता है। और जो ग्राउंड जीरो पर मैं घूम भी रहा हूं, लोग कई मुद्दों पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। एक युवा में रोजगार का मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा था। वहीं कई सारे जो 30 साल से 35 साल से 40 साल से ऊपर के लोग हैं, जो 90 का दौर जिन्होंने देखा है, वो फिर जंगल राज या सुरक्षा और सम्मान, या फिर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। और 2020 में जो वोटिंग हुई थी उससे भी ज्यादा 25 साल से। तो 2010 में जो नतीजे आए थे एनडीए के पक्ष में, एनडीए के नेता मान रहे हैं, विजय सिन्हा से अभी बात हुई थी डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि ये एनडीए के पक्ष में बहुमत है और प्रचंड बहुमत है। एक बड़ी वजह यह भी रही कि छठ महापर्व है और छठ महापर्व के दौरान बहुत संख्या में लोग आते हैं बिहार में, और वो यहीं पर रुक जाते हैं 10-15 दिन तक। तो चुनाव आयोग का जो मकसद था वो एक तरह से सफल रहा कि छठ महापर्व के दौरान जो लोग आएंगे वो वोट करेंगे, इस चुनाव में हिस्सा लेंगे, तो वो असरदार रहा। और इस वजह से जीत जिसकी भी हो, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में जनता ने, बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर बीजेपी इज वेरी कॉन्फिडेंट जी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो दूसरे हैं, सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि दे आर विनिंग 100 आउट ऑफ 121 सीट। 100 सीटों पर वो अपना दावा ठोक रहे हैं इस पहले चरण में। ये भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस जो है बीजेपी द्वारा इस वक्त दिखाया जा रहा है। सुमित, बिल्कुल। अब सुबह जब गिरिराज सिंह वोट डालने पहुंचे थे सुबह 7 बजे अपने बूथ पर, तो उनसे भी यही मैंने सवाल किया था कि 121 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, आपका आकलन क्या है? वोटिंग शुरू हो गई है, अभी आप क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने एग्जैक्ट फिगर बताया था 95 सीट।
दरअसल वो 95 सीट 2010 में मिली थी और एनडीए के तमाम नेता, गिरिराज सिंह हैं, सम्राट चौधरी ने 100 के करीब, तो एक ही फिगर, विजय सिन्हा से भी हमने सवाल यही किया कि क्या आप फिगर मान रहे हैं 95, तो उन्होंने भी कहा कि 95 से 100 के बीच, 121 में 95 से 100 के बीच एनडीए के पक्ष में ये नतीजे आएंगे। तो एनडीए के नेता जो उम्मीद जता रहे हैं, या तो वो होगा या तो फिर इसके उलट होगा जो वोटिंग टर्नआउट, जैसा कि मैंने कहा कि या तो ये एंटी इनकम्बेंसी इसके पीछे या फिर सरकार के पक्ष में जनता ने एक तरह से एग्रेसिव वोटिंग की है और जिसका नतीजा हो सकता है 14 नवंबर को या तो एनडीए या महागठबंधन, बीच का कुछ नहीं होगा। सरकार बहुत प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है, ये विश्लेषक कह रहे हैं और जो मैं भी अनुमान लगा पा रहा हूं कि इस वोटिंग के मायने यही, हालांकि 122 सीटों पर अभी वोटिंग बाकी है, जिसमें मिथिलांचल की कुछ सीटें हैं, जिसमें सीमांचल की बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, तो सीमांचल एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, तो उसमें देखना होगा सेकेंड फेज के इलेक्शन में कि क्या वोटिंग टर्नआउट रहता है। लेकिन फिलहाल ये शुभ संकेत हैं, अच्छे संकेत हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए सुमित। रिपब्लिक टीवी viewers is getting you all the latest from ground zero. It's a historic voter turnout indeed, and we will continue to decode in our prime time what does it really mean. But in the meantime, it seems that Congress has continued to, somewhere show indications that it's conceding defeat. Now, it's a big twist that has come in the Haryana vote chori controversy of Rahul Gandhi. A Brazilian model's photo that was used by Rahul Gandhi in that presentation, it has landed him right in the middle of embarrassment, it seems, because Rahul Gandhi, while he was exposing these so-called age files, he was alleging voter fraud. He showed an image that he claimed appeared on multiple voter IDs in Haryana during the voting. Now, it turns out that this picture actually belongs to a Brazilian model called Larissa Neri, who herself has now opened up on this. She has reacted that she's shocked that her photo was used to fuel political debate in another country. Here's more. In a bizarre twist to Haryana's vote chori row, a Brazilian model's photo found its way into Indian politics. At a Delhi presser, Rahul Gandhi flashed a woman's image, claiming it appeared 22 times on voter rolls under names like Seema and Saraswati. The Congress leader called it proof of large-scale electoral fraud, blaming it for his party's defeat in Haryana. You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana, and she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati. But soon after, the internet identified the woman as Larissa Neri, a Brazilian model and influencer. She has hit out at Rahul Gandhi reacting to the fake claims. Gente, contar pra vocês uma fofoca, vocês vão rir demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Eu tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de voto, que tem que votar. E na Índia, estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. Que doideira é essa? Que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou, querendo saber sobre esse trem, ligou lá no salão, no meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista. Aí eu não respondi, falei pra Tatá não passar meu número e tal. Aí o cara achou meu Instagram, me chamou no Instagram. Agora uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, uma amiga minha de outra cidade, me manda uma foto. Vou colocar aqui pra vocês, aqui embaixo pra vocês verem. Aqui. Vocês não vão acreditar. Ô, gente. What began as Rahul Gandhi's charge of voter fraud has turned into a global mix-up and a moment of embarrassment for Congress on the election day. And that's all from our side on this edition of 6 Hours at 6. We'll be right back with Live and Breaking.